Slow delivery to Rakep Patel. And a timber. As we launched off. Replacing Rakep Patel. Is Minkunj Pindolia. Performing leg. Thank you. Middle રાખજો. Forward માંથી મારશે. Vinod Drabadia doing some variation. And that variation helped him to get the wicket of Rakep Patel. Slow delivery once again, a full toss. Just one run. With that single, Silverspread Mafuko Mavericks are one short of 100 runs with their required run rate of 16.50. Confirming leg. Thank you. Bundi coming to bowl his third over and the 17th over for the team.
These top-level collegiate coaches, particularly in college baseball, basketball, and football, to lead these elite programs takes a very unique leader, and this man right here is no exception to that rule. An incredibly impressive performance, and the game plan that Dan Hurley laid out was executed. You just won a national championship. Do you feel pressure? How do you deal with that for you or your players? I feel incredible pressure to win every game. Your foundation better be strong because you're under intense scrutiny. You're under intense criticism when it's going bad. Far, far greater than that is like this competitive animal that you have inside you. I feel like I coach every game like I've never won a game. You have the culture of your organization that you're looking to absolutely perfect, and you're looking for any crack of it in any behavior or any habit of all of your people on a daily basis. Model who you want everyone in the organization to be. First person in the building, last one to leave the building. If you can't show up with the absolute maximum effort, you can't play for me. This is about us being allowed to coach them and get the most out of them, and sometimes it's going to hurt, it's going to be painful. My evidence of success at various levels as a coach, it gives me the ability to be honest, to be tough on them when I need to, and also to celebrate them when they're successful. You're chasing the best way to really help develop better men, to help develop better people. Welcome back to the show, everybody. I've wanted to have this man on for a while. I've been, I guess, a fan and a studier of his for a very long time. I told him this when we were off camera. He's achieved things in his career and in his life that very, very few leaders have achieved. The more I've been around the sports world, everyone, I have to tell you, these top-level collegiate coaches, particularly in college baseball, basketball, and football that I've been around, are not just some of the great coaches that I've been around. They're some of the great leaders in any enterprise that I've been around, in any enterprise, business, politics, or otherwise. To lead these elite programs and to do it in a way that they do it consistently takes a very unique leader, and this man right here is no exception to that rule. He is the University of Connecticut's head basketball coach. They happen to be the 2023 national champs, and his name is Dan Hurley. Dan, it's really an honor to have you here today, brother. Thank you for being here. Yeah, Ed, man, it's awesome to be on, and your voice is real familiar. You know, every morning I kind of start the day working out, but I'm used to hearing your voice on like speed and a quarter. You know, Right. you know, when I'm trying to maximize my time, you know, in the morning when I'm on the Peloton or working out. But it's an honor to be on here, man. Oh, well, thank you for that. Yeah, when I meet people in person, I go, one, I thought you'd be taller, and two, I thought you talked a little bit faster. And I'm like, the latter is because of the speed at which you listen to my podcast, probably. So, and I'd be sick of me too. I'd speed it up as well. My kids have it on like 5 times speed, so they're done in like 10 minutes. So listen, congratulations on the national championship, but really on your entire career. Everywhere you've gone, they were losing pretty bad before you got there, and then within a pretty short window of time, you've been able to turn things around. I wonder when you take something over like that. Let's just take UConn for the last job that you've had. What is the first thing you start with? Is it culture? Is it the players themselves? Is there one thing you go, this is where I'm going to begin to turn something around? Yeah, I mean, for me, Ed, it's before arrival. It's when I kind of torture myself over whether I should make the move or not. You know, when you're coaching it at Wagner and Rhode Island comes calling, or, you know, when you're at Rhode Island and now it's a chance to go to UConn. For me, I'm very emotional with my work, and I'm very emotional with the way that I coach, and I become very attached to a place in my players. So it's hard for me to leave. You know, so people think that all coaches, when they make moves up in the coaching ladder, that it's like an easy decision because it's more money and a bigger stage. But, you know, prior to taking a job, like, I have to really believe in the place I'm going to, that like I'm going to be able to do like historical success there, or not just kind of, you know, hold on to the job, but like
do incredible things. And, so that goes on behind the scenes. And then, obviously your press conference, man, when you get the stage and you get introduced to the fan base and to the university organization for the first time, you've got to do a great job with that. I mean, you got to get people excited. You've got to, establish a vision and an identity of who you're going to be, and generate that enthusiasm, because you're taking over for a coach and a program that has bottomed out. Right. So the fan base has got to be fired up. And then, the one thing that I've done when I've gone into these places that I think is important in terms of your people is I don't go in there and get rid of any of the staff or move on from any of the players. I give ample amount of time for people to show value or show a commitment to changing habits, behavior. So I really evaluate things and not come in a transactional way, and try to show people that I'm more transformational and that I want to work with people. So I'm building a program, I think, on a solid foundation and a culture of trust with anyone that survives. Now it becomes survival, Ed, because I set a much different tone and an energy and a work rate. So not everyone's going to survive, but the people that do, they know what I'm all about. And then, hire the best staff you can hire, and make sure you get that blue chip talent that's about the right things. But, really when you get in there, man, I think it's just like establish a work rate and a trust and a work ethic that's going to kind of blow people away, and then obviously go get some talented people. I want to know what that looks like. I was thinking when you were describing that, with no criticism of anybody else, but in fact, this guy and I are rep by the same people, but thinking a real prominent former NFL guy that's recently taken over a college football program, and he kind of just like, what I've heard, sort of gutted the place, like initially, right? I think you probably know what I'm talking about. And when I heard that, I thought, I get the standard thing. Same time, I don't know that that's fair to the kids who had already made commitments to that school and probably could have gone elsewhere at one time. So I really admire that you do it that way. What does it look like, though? So you said, I want to establish a vision. We just get a little granular. So you come in, you have your press conference. Took you a long time to decide to leave where you were because you love the kids. You built relationships with the community, the people, the boosters, I assume. But now you've moved. You've done your press conference. These kids are now used to losing, probably a standard that's not what you're going to set. So is that like an initial, like, hey, here's how things are going to change? Or is it more like, I'm going to show you rather than tell you? I'm just curious, because a lot of people that are listening to this are entrepreneurs. They got an organization right now that's functioning at, call it 60% of its capacity. They're going to listen to you today, who took a team that was literally losing and take them to a national championship. What does it look like to establish that vision and that work ethic, the standard, all that other stuff? Yeah. So, Ed, for me, in terms of the players, I think the first thing that I showed them in the first team meeting, beyond making a commitment to them to to being the type of coach that can really develop them, is I showed them one clip, one play from the last season before I had gotten to UConn. It was from the last season of the prior coach, and I think they were playing Villanova at home at the Hartford Civic Center here. And I think on the possession, I think Villanova might have missed 4 shots in one possession, but got 4 offensive rebounds. So just outworking them, hustling, superior talent plus not giving the effort, right? So Villanova's got better players, and they're playing 1,000 times harder than we're playing, and their ambition to win is far greater. So I showed them that play, and I said that's going to change, and that's not that type of effort. It will not be tolerated. And I showed them just one possession from
end of 19 overs, Silverspread Mafoko Mavericks 120 runs for a loss of 9 wickets. Silverspread Mafoko Mavericks required 45 runs in 6 balls. अरे भाई पीछे चले आना जल्दी 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 ठीक है जल्दी जल्दी कर मार चल चल बस बस no vuelve a caer ahí dentro जल्दी जल्दी रिंगा समा रिंगा समा रिंगे सारो एक राज्य समा रिंगा चलो And that's the end of match number 13. Raymasters by 37 runs. Thank you, ladies and gentlemen. Silverspread SCLPS Premier League Day-Night Cricket Tournament has been organized by Shri Kachilava Patel Samaj Youth League, proudly sponsored by our gold sponsors, Silverspread Pipes Meru, silver sponsors Nairobi Timber Projects Limited and Broadwalk Mall, silver sponsors Lakshman Bhai Construction, who are celebrating 70 years in construction industries, bronze sponsors Mombasa Cement, printing partners Elite Offset Limited, fuel partners Mafuko Group of Companies, media partners Radio 44 and the Asian Weekly, man of the match partners Nairobi Timber Projects Limited and Broadwalk Mall, highest number of sixes partners Lakshman Bhai Construction, media sponsors Asher Locker India Private Limited and Propel Engineering Excellence, internet providers Hirani Telecommunications courtesy of Mansukh Bhai Hirani. Can I request Arvind Halai to please stay back?
I please request Dhruv Buva to give the Man of the Match award? Man of the Match award goes to Arvind Halai. Man of the Match award, can I please request Mansukh Bhai Kirai? Hiran. Dhruv Buva to give Man of the Match. To Arvind Halai. Can I kindly request Mansukh Bahirani to present the highest number of sixes? Highest number of sixes goes to Arvind Halai. Thank you, ladies and gentlemen. Join us tomorrow for match number 14 between Team Swami Bappa and Hari Om Titans. इक्का कहाँ गिरेगा आप देख सकते हैं इक्का अंदर की तरफ गिरा और देखिए गाइस तुम्हारा भाई जीता पैसे और 2400 रुपए जीता तुम्हारा भाई आप देख सकते हैं रुपए की फिर से बाहर की तरफ लगा दिए अब मेरी टोटल शर्ट लगी 1875 रुपए क्योंकि पहली बार में नहीं आया था तो वो भी प्लस हो जाएगी शर्ट में आप देख सकते हैं जे है अब एक इस तरफ फेंक रही है इस तरफ फेंक रही है इस तरफ फेंक रही है इस तरफ और जे आया तुम्हारा भाई बाहर की तरफ जीता और देखिए अब तुम्हारा भाई 3562 रुपए जीत गया तुम्हारा भाई आप देख सकते हैं गाइस मेरा बैलेंस हो गया 7326 रुपए और ये तेरे भाई पे वाउचर भी आया गाइस आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हो रखा है और हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बिल्कुल इस नई वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको जिली गेम्स का एक बेहतरीन गेम के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है अंदर बाहर जो कि अब इंडिया का एक फेमस गेम है आपको पता ही होगा गाइस जैसे अगर इंडिया का फेवरेट गेम है तो आपका भी फेवरेट गेम होगा अब जैसे ही मैंने एंटर करा आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट लेवल है लेवल का मतलब है गेम सब सेम है बस अगर आपका बजट कम है तो आप कम लेवल से खेल सकते हैं अगर आपका बजट ज्यादा तो आप ज्यादा लेवल से खेल सकते हैं और कोई फर्क नहीं है लेवल में अब हम एंटर करते हैं गेम में और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब जैसे गेम में एंटर करेंगे कैसा इंटरफेस दिखेगा गाइस एंटर करने के लिए आपको जस्ट टैप करना है आप जैसे अंदर बाहर में एंटर करेंगे आपको कैसे इंटरफेस दिखेगा गाइस और इसमें आपको बहुत ही आसान गेम है गाइस इसमें कुछ नहीं करना होता देखिए ये एक पत्ता फेंकती है उसके बाद आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि ये 10 अंदर की तरफ गिरेगा बाहर की तरफ गिरेगा बस आपको इसमें 2 बैट लगानी होती है आप एक भी लगा सकते हैं 2 भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी है गाइस अब जैसे इसने 10 फेंका आप देखिए इसने पहला पत्ता फेंका उसके बाद आपसे फिर से एक बार बैट लगवाएगी आपकी मर्जी आपको लगानी है लगाओ नहीं लगानी तो एक भी लगा सकते 2 भी लगा सकते हैं उसके बाद देखिए एक एक करके पत्ता एक तरफ फेंकेगी रेड की तरफ फेंकेगी रेड मतलब है अंदर और उसके बाद ब्लू की तरफ फेंकेगी वो है बाहर अब देख सकते हैं आप ब्लू की तरफ 10 आया और देखिए 10 में जिसने भी पैसे लगाए थे वो जीत गया तो गाइस ये गेम इतना आसान है और ये गेम को जीतने के इतने उम्मीद है और इतने पैसे मिल सकते हैं इस गेम से आपको मैं बता सकता हूँ गाइस अब आप देख सकते हैं जैसे कि इसने देखो एक 2 फेंका और आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको शर्त लगानी है तो आपको कुछ नहीं करना जस्ट ये रेड वाला जहाँ पे अंदर लिखा है नीचे की तरफ आपको यहाँ पे क्लिक करना है अगर आपको बाहर की तरफ शर्त लगानी है तो आपको बाहर की तरफ क्लिक करना है बस अगर आपको पहली बार ये देखो 2 फेंका इसने पहला पत्ता फेंका अगर इसमें आ जाए तो आपको और भी पैसे ज्यादा मिलते हैं उसके बाद देखिए फिर से पूछेगी और अगर आप इस बार अगर आपने 2 शर्त लगाई होगी तो आपको दोनों के पैसे मिलेंगे अगर आपने दोनों एक ही जगह लगाई होगी तो डबल पैसे मिलेंगे अगर अलग अलग जगह लगाई होगी तो जो भी आपका डिफरेंस होगा वो आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं 2 आया अब इसने 2 फेंकती रह रही है 2 आया जैसी 2 आएगा किसी भी तरफ गिर सकता है आप किसी भी टाइम गिर सकता है गाइस और उसी वो बंदा जिसने देखिए बाहर की तरफ गिर गया बाहर वाले ने जो पैसे लगाते देखिए मैंने भी पैसे लगाए थे मेरे 450 के हो गए 855 आपको देख सकते हैं कि कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ और अब देख सकते हैं वाउचर भी आया मेरे को मैं अंदर बाहर भी खेल रहा हूँ मेरे को देखिए लाइव बेट का वाउचर भी आया आप एक गेम से 2 प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके बाद गाइस ये देखिए ऊपर रोड मैप है आपको बताएगा ब्लू का मतलब है कि बाहर की तरफ आया था और रेड का मतलब है कि अंदर की तरफ आया था आप देख सकते हैं रोड
मैप है, इससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अंदर की तरफ आता है कि बाहर की तरफ आता है, इससे कि आपको आसानी होगी प्रिडिक्शन करने में गाइस। अब आप देख सकते हैं लॉबी है, लॉबी में आप लेवल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए मिनिमम बेट 37 रुपए है, किसी में मिनिमम बेट 18 रुपए है, आपकी मर्जी गाइस, जैसा आपका बजट है। आपको ज्यादा पैसों की खेलनी है, कम पैसों की खेलनी है, जस्ट आपको एक ज्वाइन पे क्लिक करना है और आप देखिए दूसरी लॉबी में पहुंच जाएंगे। देखिए गेम स्टार्ट हो गया दूसरी लॉबी में और आप देख सकते हैं इसने इक्का फेंका ए का। अब इक्का अंदर की तरफ गिरेगा बाहर की तरफ गिरेगा, देखिए यहाँ पे प्लस कर सकते हैं आप बेट बढ़ाने के लिए, माइनस कर सकते हैं और जस्ट आपको अंदर पे टैप करना है और आपकी बेट अंदर पे लग जाएगी। अगर आपको बाहर की तरफ लगानी थी तो जस्ट आपको बाहर पे टैप करना है, प्लस करेंगे तो पैसे बढ़ते जाएंगे, माइनस करेंगे तो पैसे कम होते रहेंगे। आप देख सकते हैं गाइस इस वक्त मैंने बेट लगानी आपको दिखाई है, मैंने बेट भी लगाई है, देख सकते हैं इक्का आया है और हमने इस टाइम अंदर की तरफ बेट लगाई है गाइस, आप देख सकते हैं। और देखिए अब इक्का कहाँ गिरेगा, आप देख सकते हैं इक्का अंदर की तरफ गिरा और देखिए गाइस तुम्हारा भाई जीता पैसे और 2400 रुपए जीता तुम्हारा भाई, आप देख सकते हैं गाइस 2400 रुपए जीता। आप हेल्प पेज में जाके गाइस इसके हिंदी में भी और इंग्लिश में भी और अलग अलग लैंग्वेज में रूल्स पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बता रहा है कि फर्स्ट बैट है, फर्स्ट बैट जो एक मिडल में कार्ड होगा, फिर वो लेफ्ट अंदर की तरफ फेंकेगी बाहर की तरफ फेंकेगी, अगर जो भी जिस तरफ आया और अगर आपने अंदर की तरफ लगाएगा तो अंदर जीत जाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा तो बाहर जीत जाएगा। और उसके बाद फिर उसके बाद आपसे दूसरी बैट कंफर्म करेगा, अगर पहली में ही आ गया तो वो पहले में जीत जाएगा, अगर पहली में नहीं आया तो उसके बाद आपसे वो दूसरी बार भी बैट लगाने की कोशिश करेगी। आपकी मर्जी है गाइस, आपको एक बैट लगानी है, दो बैट लगानी है। फाइनल बैट में गाइस जो भी पत्ता आएगा वो फेंकती रहेगी, इधर की तरफ एक, इधर एक, उधर एक, इधर एक, उधर एक, अंदर एक, बाहर एक, अंदर एक, बाहर, और उसी तरीके से आपको पैसे मिलते रहेंगे। अंदर की तरफ गाइस प्रॉफिट है 1:1, बाहर की तरफ है गाइस 1:0.9, तो बाहर की तरफ रेशियो प्रॉफिट कम है, अंदर की तरफ प्रॉफिट ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं गाइस, फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब ये देखिए टाइमर था, हमने देखिए अंदर की तरफ शर्ट लगाई, ये देखिए बता रहा है ए, हमने 600 की शर्ट लगाई और अब ये फिर से फाइनल बैट पूछ रहा है, फिर से हमने ए के में 600 की शर्ट लगाई तो हमारी 1200 रुपए की शर्ट लग गई गाइस। आप देख सकते हैं 1200 रुपए की शर्ट लगी हुई है और एक एक करके देखिए पत्ते फेंक रही है, क्यू फेंक रही है, 8 फेंक रही है, देख सकते हैं आप अलग अलग पत्ते फेंक रही है। अब एक गिरा बाहर की तरफ गाइस, हम ये वाली शर्ट हार गए, कोई नहीं गाइस, हम अगला राउंड खेलेंगे। अभी आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस है 5639। अब आप देख सकते हैं इसने इक्का फेंका गाइस,